started teaching JEE NEET chemistry. So I have been teaching for more than 6 years now. लेकिन कॉमर्स एंड कॉस्टिंग कंपनीज एक्टर्स टू मच. सो पहले एक बार ये क्लियर होता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाता है, तो इट हेल्प्स यू विद ऑल दीज डिफरेंट एग्जाम्स. So I had made up my mind this year that I'll have to come in the top 28 or to top 10. So that was my strategy, that I'll focus on phase 2 paper 2. GA के लिए I only watch videos for phase 1, mostly videos, and few like weekly videos for general GA and finance related GA which would also help in phase 2 paper 2. अगर मैंने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किया तो मैं घर पे एक वर्ड भी नहीं पढ़ सकता, ऐसा मेरे साथ है. तो मेरा ऑफिस 5:30 में अगर खत्म होता था शाम में, तो I would go to library at 6 or 6:30 and दो सिटिंग ऐसे 6:30 to 8:30 or 9 and then 9:30 to 12. बीच में ऐसा लगता है थोड़ा बर्नआउट, ऐसा कि भी वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे ऐसे दोस्त लोग पूरा शादी वादी अटेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा फील होता था. बाकी ऐसे अभी आदत ही था कि अभी ऑफिस जाना है, लाइब्रेरी जाना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन आस्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट बॉन्ड मार्केट, interest rate. How would you minimize the interest rate risk in bond market? So hi and welcome everyone to the channel. I hope everyone is good. So we are very excited to welcome Raunit Verma today. He is the one who recently cleared PFRDA exam, and he is going to take us through his journey of ups and downs, how he prepared for everything, and of course it is actually going to be a very insightful video for all of us here. All right, so thank you Raunit Verma for joining us. So we'll quickly start with a basic introduction of yours. Actually, we want to know what was your educational background and what was your professional background as well. My name is Raunit Verma, and I belong to a very small town that is Raxaul from East Champaran, Bihar. And I have done my basic schooling there till 10th. Then I moved to Bokaro for 11th and 12th. And I have done my civil engineering from Heritage Institute of Technology, which is in Kolkata. And after a few days after the final exam, I started teaching JEE NEET chemistry. So I have been teaching for more than 6 years now. I have been teaching in different institutes for JEE and NEET. And for last few years, I think from mid 2022, I started preparing for these regulatory body exams. All right, so I think Appa journey in itself actually is something which is full of everything, right? You prepared for civil Yes. engineering and then you went on to teaching, and now you're here in the regulatory examination. So this is a kind of journey which actually inspires a lot of people. तो एक्चुअली में आपने रेगुलेटरी एग्जाम्स में ही आने का क्यों सोचा, और व्हाई यू प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर पीएफआरडीए हियर? I was doing good in my job, that was teaching. लेकिन after COVID and after 2022, actually I went through some health issues, and I decided that I also got to know about these exams from a friend. I was already interested in these things, these financial things, but I got to know about these opportunities in regulatory sector. So I started preparing. Then I had time also because I had taken some break for my work because of that health. So I started preparing then, and in the meanwhile, I cleared few interviews. Like in 2023, I till the IRDA interview. Last year, I went till SEBI and IFSC interview. So finally, this time I could make it to the final list. Okay, so matlab, in a way, like you were comprehensively preparing for all of the regulatory examinations and not specifically Yes. for PFRDA only. Okay, so what was the strategy? Like you just mentioned कि आप हर एक regulatory body के लिए जो है वो you people were preparing, like actually you were preparing for it. So what extra you were putting specifically to PFRDA? What else you were not putting towards rest of the examinations? Because there are most of the aspirants जो कि बहुत ज़्यादा comprehensively prepare करना चाहते हैं. वो आरबीआई से भी शुरू करते हैं, वो नाबार्ड के लिए भी एग्जामिनेशन देते हैं, फिर उसके बाद वो सेबी, एंड वी आर एक्चुअली हैविंग मल्टीपल ऑफ रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस. पीपल एक्चुअली वांट टू अपेयर फॉर दीज मल्टीपल एग्जामिनेशंस. So what was clearly your strategy for appearing for multiple of the regulatory examination and of course clearing them as well? So first we need to understand the requirements of all the exams. Like I also started with RBI. But I understood that you cannot do RBI and other exams simultaneously. You can do other regulatory exams like SEBI, PFRDA, IRDA, and IFSC, that all together. But if you have to do RBA, then you'll have to do it separately.
that I realized. So Mm-hmm. after one or two attempts, I started preparing for these exams simultaneously. And once you are done with these commerce related subjects, then it becomes easy. For the first time for an engineering background student, अगर आप start करें commerce पढ़ना और economics, I had taken economics in 12th, so it was not an issue. लेकिन commerce and costing, companies act was uh, too much. So पहले एक बार ये क्लियर होता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाता है, तो इट हेल्प्स यू विद ऑल दीज डिफरेंट एग्जाम्स. क्योंकि आईएफएससीए और सारे में ये तो कॉमन है, ई टाइप Mm-hmm. अगर छोड़ देता हूँ तो अगर साइमल्टेनियसली करना है मुझे लगता है तो आईएफएससी, पीएफआरडी और सेबी, इन तीनों के लिए एक साथ अच्छे से साइमल्टेनियसली किया जा सकता है. और अगर मैं बात करूँ कि लास्ट टाइम और इसमें डिफरेंट क्या था, आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर सिर्फ आप फेज वन क्लियर करके फेज टू अगर सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं ना, कट ऑफ क्लियर करके जस्ट गोइंग फॉर द इंटरव्यू, दैट इज नॉट इनफ. क्योंकि लाइक इन पीएफआरडी ओनली दे हैड टेकन 280 स्टूडेंट्स फॉर 28 सीट्स फॉर जर्नलिस्ट. So if you are getting in that last 270 to 280, it is not going to be enough, because I had already given three interviews. So I Mm-hmm. had made up my mind this year that I'll have to come in the top 28 or to top 10. So that was my strategy, that I'll focus on phase 2 paper 2 Okay. mostly, because अभी मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए थे और फेज वन तो आसानी से होता था, हाँ जी. क्यूआरई एंड इंग्लिश. तो आई हैड टू फोकस ऑन फेज टू, जो कि लास्ट में वही कट ऑफ डिसाइड करने वाला है. Mm-hmm. और दैट ऑल्सो स्पेसिफिकली फेज टू पेपर टू. सो आई Mm-hmm. दिस टाइम आई फोकस मोस्टली ऑन फेज टू पेपर टू. आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई मार्क्स इन पेपर टू. हम्म। तो आपने अभी मेंशन करा, जस्ट मेंशन अबाउट दिस थिंग कि यू वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, और वो भी अप्रोच जो था वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट था. तो यू नेवर फेल्ट लाइक कि हर एक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है. अगर मैं एक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, देन ऑल ऑफ अ सडन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड देन ऑफ कोर्स इट इज गेटिंग फिनिश्ड, एंड देन जंपिंग टू द नेक्स्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो कभी सिलेबस ओवरलैपिंग लगा? अगर ओवरलैपिंग है भी है, तो आप एग्जैक्टली कैसे डिफरेंशिएट करते थे हर एक को? क्योंकि ये जो जितना भी हमारे पास कंटेंट है, बिकॉज क्यू आर ई एंड स्पेसिफिकली फेज वन इन इटसेल्फ इज ऑफ कोर्स वेरी माइंड बॉगलिंग काइंड ऑफ थिंग, है ना. और उसके बाद फेज टू को डिफरेंशिएट करना, एंड ऑफ कोर्स पेंशन सेक्टर है, कंपनीज वगैरह, जितने भी हमारी जो फेज टू के इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, उनको डिफरेंशिएट करना, फिर उसके बाद में हर एक सिलेबस के बारे में अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके उनको भी पढ़ना. एंड इट एक्चुअली नीड्स अ स्किल कि सबसे पहले आप you people need to prepare one strategy for it, and then of course you can jump and start preparing for it. So what was your strategy, and how you were exactly preparing for it? सो अबाउट ओवरलैपिंग सिलेबस, आई थिंक इट्स गुड दैट वी हैव ओवरलैपिंग सिलेबस, दैट Okay. अगर एक किया तो फिर वो दूसरे में भी काम आता है. Mm-hmm. And starting from phase one, so phase one was not an issue for me because I Mm-hmm. had given a lot of exams and I never failed to clear phase one. वो sorted था. English was sorted. English I could get easily around 20 out of 25, so that was sorted. And you have to Mm-hmm. just get to 40%, I guess. So you can get 20 marks here or there. GA अगर आपने सिर्फ GA के लिए I only watch videos for phase one, mostly videos, and few like weekly videos for general GA and finance related GA, which would also help in phase two, paper two. So that was my approach for phase one. And for phase two, I thought that uh, earlier I used to struggle with time in descriptive paper. So this time I made sure that I complete the paper in time. Mm-hmm. So I practiced it on keyboard so that I could complete the paper and not do anything extraordinary in paper one, because the output to input ratio is very less. Because if Mm-hmm. I'll put a lot of time in paper one descriptive, there will be a little increase in the marks. लेकिन अगर वही पेपर टू में अगर बहुत ज्यादा किया तो दैट विल हैव सिग्निफिकेंट रिजल्ट इम्प्रूवमेंट. तो मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए किया, और 70 to 80% of time I dedicated to paper two of phase two. Mm-hmm. Okay. So, sir, when you started preparing for phase one, what was exactly your strategy? क्योंकि बहुत सारे मतलब बच्चों के ये भी डाउट्स होते हैं कि जीए को अप्रोच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है.
और वी हैव सीन दिस ईयर एज वेल कि पेपर जो है वो थोड़ा सा चेंज भी जो है वो पेपर्स में आया है, वो से दैट वाज एक्चुअली वेरी टफ, बट यस चेंज जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट जो है हमें देखने को मिला है. When you started for preparing these regulatory exams, now as you mentioned recently only that phase one was not something कि आपको बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए time देना पड़े. It was easy for you. But when you, I'm very clear with this thing that when you started preparing for phase one also, आपको कहीं ना कहीं तो difficulty तो आई होगी, है ना? So when you started preparing for phase one, what were the difficulties that you faced and how you started preparing for it? What was the approach for what was your approach for QRE and specifically GA? I want a specific, emphasis on GA here. Okay. So for QRE, I'll start with QRE. Being Mm-hmm. from an engineering background, I think quant is it is good. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वी गेट सेक्शनल टाइम और वी गेट लिमिटेड टाइम इन दीज एग्जाम्स. तो क्वांट में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट दैट यू विल गेट थ्रू मॉक टेस्ट. एंड इफ समवन इज नॉट हैव these backgrounds, या फिर क्वांट्स में अच्छे नहीं है, तो दे विल हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स ऑफ Mm-hmm. क्वांट और उसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. बट इफ यू आर ऑलरेडी गुड, यू नीड टू जस्ट गिव द मार्क्स फॉर क्वांट. फॉर रीजनिंग ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी एक पजल में, अगर इफ यू गेट स्टक इन दैट, पूरा टाइम जा सकता है. तो यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव फॉर गिविंग एग्जाम्स, एंड दैट यू विल लर्न थ्रू गिविंग अ लॉट ऑफ मार्क्स. जैसे रीजनिंग में यू हैव टू सेलेक्ट दोज टॉपिक्स like coding, decoding, and inequalities, which are easier. And then English, my English was already good as far as phase one was concerned. uh, and coming to GA. So uh, for these exams, like when I prepared for RBI, I did comprehensive GA from all the PDFs and all. But for these exams, I think phase one, I think we need to get few अगर कुछ भी मार्क्स लिया ना, 10 मार्क्स भी अगर आया GA में, it is sufficient. So my approach was, I mostly watched videos, the weekly videos uh, for general current affairs from different platforms, and Mm-hmm. then mostly finance related GA. So I mainly focused on finance related GA. That would also help in phase two. So that was my approach for GA. Okay. So you started, you mentioned that GA is of course helpful for phase one plus phase two as well, है ना? So, Yes. how you started preparing for it? Like you started for phase two and then you jumped on to phase one, या फिर आपने phase one की पहले preparation करी थी फिर उसके बाद आपने phase two पे jump करा? मैंने फेज टू के लिए ही स्टार्ट, मतलब मैं स्टार्टिंग से फेज टू के लिए ही किया था. हम्म. जीए जीए फेज वन के लिए मोस्टली मैंने जो जनरल करंट अफेयर्स है ना, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर, वो हम्म. सिर्फ एक पार्ट है जो कि मैंने फेज टू के लिए सेपरेटली किया था. Okay. दैट आल्सो थ्रू वीडियोस. समटाइम्स आई वुड मेक नोट्स. जब मैं कहीं बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो आई वुड मेक नोट्स फ्रॉम दैट वीडियोस. Otherwise, I'll just go through those videos. Like there are some weekly top 300 views. These kind of videos are there. So for हम्म. general, I would do that. And for finance related, I know that that is going to help in phase two also. तो वो थोड़ा seriously अच्छे से बार बार I'll revise that. Okay. Okay. So coming on the main point, sir, what was your approach for pension sector? Okay. So uh, for pension sector, first I had to complete all the static, Mm-hmm. those different schemes, and all the NPS architecture, and all those static things. So I Mm-hmm. went through different PDFs, different videos, mostly PDFs. I refer to PDFs for that. First, I completed static. I did revisions. Uh, I gave some mocks. I practiced questions, and after I was done with this static thing, I went to the current happenings in pension sector. Mm-hmm. For that, I would go. I watched some videos. There was a few videos of Oliveboard also. You had taken only some MCQ videos of PFRDA related current affairs, I think. Mm-hmm. So I had also gone through those three. There were three videos, I think. So through MCQs revision. So I used to go through these videos for Oh, current affairs, and I would just search on business standard, pension or PFRDA, and the news that would come. I would just go through that okay. for current.
Okay. So, sir, your approach is of course a kind of very unique in nature. क्योंकि हम बहुत सारे कम aspirants ऐसे देखते हैं कि जो सिर्फ videos, you never mention about the notes. Still now, you have not mentioned about the notes, sir. Were you No, for specifically? pension sector, yes, for pension sector, I went through notes. For phase two, paper two, I went extensive. I comprehensively covered notes from different platforms, not only one platform, because I Okay. had to maximize my marks in paper two. Okay. So paper two के लिए तो सब कुछ clear है. Paper one के लिए सिर्फ videos. Okay. Got it, sir. Okay. So, now you have already shared your approach here. Now, coming on to the part that what were your challenges, as in what kind of challenges you were actually facing for preparing for multiple of the examination. I won't be specifically focusing on PFRD only. Yes, you can mention about the PFRDA separately, but alag challenges bhi, if you want, you can discuss about that as well. Yeah, so I'll start with uh, because first when I gave these exams, I think it was SEBI or SEBI, I think. Mm-hmm. So when I was preparing, I felt confident about because I had read those commerce and account and different topics. So I felt confident at that time. But I went to the exam, I felt like commerce and accountancy was something that was giving me hard time. So मतलब पहले तो ऐसा लगा कि सब हो रहा है अच्छे से. I could do good in. I went. I did good in Companies Act when appearing for the first time also, costing and also. But commerce and accounting was something that was a little. I had to do more than what I did in the first time. So further, I started searching videos again. So I searched some videos. I got some commerce teachers, some CA intermediate teachers. So I went through their videos for accounting standard. There are a few teachers who teach for CA intermediate. So I went to their video. I made notes. There is one also teacher. There is a teacher who teaches for 11th and 12th commerce and accountancy, and his language is also relatable very much. So I went through his videos for clearing the basics and foundation. So I did that, and then I practiced a lot of questions also, which I did not do in the first time. Mm-hmm. So this was one thing that was something challenging. Mm-hmm. All right. So, sir, like, can you please mention this thing कि usually जो है हम time period vary करता है हर एक aspirant के लिए. But what do you believe in? Like, do you think that static portion can be completed in only 6 months? Static portion can be completed in only 3 months. Like, what is your approach on it? It depends like how much time you have got. Like I Mm-hmm. was already working, so I got I got 3 to 4 hours in the evening, 4 or 5 hours. So if you're preparing full time, then it might get take you less time. लेकिन मैंने पहले बहुत टाइम दिया था ना मतलब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर लाइक 1 2 years एंड पहले भी मैंने लास्ट ईयर भी एग्जाम्स दिए थे Mm-hmm. तो मैंने तो अच्छे खासा टाइम में स्टैटिक किया था लेकिन इट विल डिपेंड अगर इफ यू आर फुल टाइम यू कैन डू इट इन 3 months यस यू कैन डू इट अगर आप 6 7 घंटे रोज अगर अच्छे से कर रहे हो यू कैन इजिली मैनेज इन 3 months दैट ऑल्सो with practice in 3 months yes. Okay. So you discussed about the challenges that you faced in paper, but you didn't discuss about the regular challenges that you were facing as you were working as well, and simultaneously you were Yes. preparing for regulatory exams as well. So life कैसे manage करते थे? Like most of the aspirants want to know about it, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास candidates भी हैं, बहुत सारे ऐसे aspirants भी हैं जो कि working भी हैं और उसके साथ साथ prepare भी कर रहे हैं. तो वो जो एक लाइफ बैलेंस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि Right. हमारे पास जो वर्क बैलेंस है हम उसको कैसे करते थे व्हाट इज एक्चुअली योर अप्रोच ऑन इट. अब मैं सबसे पहले आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज वेरी मच डिसिप्लिन कि ओके. अगर यस अगर आपको इतना टाइम मिला आप इतना पढ़ाई करोगे ऐसा आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन सो आई हैड टू ज्वाइन लाइब्रेरी बिकॉज दैट इज अगर मैंने लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किया तो मैं घर पे एक वर्ड भी नहीं पढ़ सकता ऐसा मेरे साथ है तो मेरा ऑफिस 5:30 में अगर खत्म होता था शाम में तो आई वुड गो टू लाइब्रेरी एट 6 or 6:30 and do sitting as a 6:30 to 8:30 or 9 and then 9:30 to 12
तो मुझे ऐसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट, और आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो सुबह में तो कुछ पढ़ाई हो नहीं सकता। हम्म तो वही मतलब यू हैव टू गो टू योर ऑफिस फ्रॉम 9 to 5 or 5:30, and then you have to, every day you have to go to library. So that is one challenge. और मतलब लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस तो जब तक आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, वो पूरा फेज में यू डोंट थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस फॉर फॉर फ्यू इयर्स। तो हम्म ऐसा ऐसा बीच बीच में ऐसा लगता है थोड़ा बर्नआउट, ऐसा कि भी वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसे लोगों ऐसे दोस्त लोग पूरा ये शादी वादी अटेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा फील होता था। बाकी ऐसे बस अभी आदत ही था कि अभी ऑफिस जाना है, लाइब्रेरी जाना है। तो I just mentioned that you were not a disciplined person, but I think you were actually consistent person क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में भी एक सच्चाई है कि हाँ जब प्रिपेयर कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स आपको जो है वो कॉन्टिन्यूअस टाइम देना पड़ता है. ऑलराइट. Okay, so sir, how mocks helped you in the examination, clearing examination? Of course, you prepared for multiple examinations, so I'm very hopeful that you would be giving multiple mocks as well. How mocks were helpful for you? अब mocks are very helpful. Like I shared with you that for the first time when I read accountancy, I felt like I know it, and in the Mm-hmm. real exam, I felt like I don't. So if you give a lot of mocks, you get a reality check beforehand. Mm-hmm. So and you'll practice it accordingly. तो बहुत मतलब कि सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू कवर सिलेबस, मल्टीपल रिविजंस एंड मल्टीपल मॉक्स। यू हैव टू गो, मतलब सारे ही टॉपिक्स के मॉक्स तो एक बार देने ही है। Mm-hmm. अगर एक बार से ज्यादा भी, अगर देयर आर ऑप्शंस इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन गिव इट मोर देन वंस। तो आपने पहले दिया, एक महीने बाद फिर से यू कैन गो थ्रू दोस मॉक्स, लेकिन you'll have to give multiple mocks. That also in all the phases, phase 1, phase 2, all the phases, even in interview. So Mm-hmm. mocks are really important. ओके. ऑलराइट सर, सो आई थिंक हम हर एक एरिया को टच कर चुके हैं फेज वन एंड वी आर क्लियर विद फेज टू एज वेल. अभी एक क्वेश्चन दैट कम्स इन माय माइंड कि बिफोर यू एक्चुअली स्टार्टेड preparing for static portion and of course combining it with current affairs and everything that it needs, उससे पहले आई थिंक देर इज वन प्रैक्टिस. आई एम वेरी होपफुल यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड इट. सिलेबस से गो थ्रू करना और पीवाई की उसका एनालिसिस करना. Right, right. What do you think? What is the importance of this kind of activity in aspirants' life? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जब भी, क्योंकि हम भी जब जीए वगैरह कवर करते हैं तो फिर उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं मैम इज दैट रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट. But otherwise, what I think is कि this is the first practice like prior to sitting in the examination or maybe just covering your static portion. ये जो है first practice होना चाहिए. So what is your say on it? Uh, Syllabus, knowing your syllabus exactly is like it will show you the path, like where you Hmm. have to go, what you have to do. Otherwise, you'll just read different things and it will not be organized. Hmm. जैसे ऐसा होता है ना कि नोटिफिकेशन के पहले यू डोंट नो कि कौन सा एग्जाम अभी आने वाला है। Hmm. लाइक बिफोर सितंबर वी वर नॉट नोइंग कि पहले कौन सा एग्जाम आएगा, क्या आएगा। सो वी वर जस्ट स्टडिंग, कुछ भी मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, बट वी वर जस्ट स्टडिंग समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। बट वंस द नोटिफिकेशन केम फॉर पीएफआरडीए, वी हैड टू जस्ट प्रिपेयर फॉर पीएफआरडीए। Hmm. तो ऐसे ही अगर सिलेबस पता है, सिलेबस नहीं अगर पता है अच्छे से, तो यू रीड डिफरेंट थिंग्स, और उसमें फिर वही इनपुट इधर उधर आउटपुट, वो एफिशिएंट पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बट इफ यू नो द सिलेबस यू विल स्टिक टू दैट, एंड वो एफिशिएंसी और टाइम, जैसे कि अगर कम टाइम है और फिर भी आप इधर उधर की चीजें पढ़ रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर Hmm. टाइम। तो फॉर दोज who have less time, उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है कि आप you stick to your syllabus, you know the PYQs, you have seen the PYQs। क्योंकि Hmm. PYQs से भी पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस और मोस्टली किस टॉपिक से क्वेश्चंस। बहुत सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक्स है जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, दोज आर मोर Hmm. इम्पोर्टेंट। तो you'll have to focus on that more। तो ये एक बेसिकली गाइडलाइन, एक पाथ एक शो करेगा फॉर फॉर प्रिपेयरिंग। Okay, got it, sir. Okay, so now coming on to the interview part. So, what was your experience? Again, I wouldn't be specifically focusing on PFRD only. Of course, that is the portion जहाँ पे ज़्यादा focus करना है. But you just mentioned about the other interviews as well.
कि इंटरव्यूज का जो एक्सपीरियंस था वो बेसिकली कैसा था, किस किस तरीके के जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, कौन सा डिफिकल्ट चैलेंजेस, मतलब कौन सा एक ऐसा पोर्शन था, एक इफ देयर हैज बीन वन पॉइंट जहाँ पे आपने यू फाउंड योरसेल्फ एज स्टक देयर एंड व्हाट वाज द अप्रोच दैट यू फाउंड आउट। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एस्पिरेंट्स से कि मैम हमारा जो, अगर मेरे को आंसर अपना एग्जैक्टली रखना है तो मैं कॉन्फिडेंस से बहुत क्रिस्प आंसर जो है वो कैसे रखूं। सो दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू नो फ्रॉम यू। Yeah. So this was my fourth interview, and हम्म। now I have given all the regulators interview except RBI. I've ओके। given IRDA, SEBI, IFSC, and this was PFRDA. हम्म। So before PFRDA, I had given three interviews, and my experience was not. Well, it was decent. The marks I got was also good, not that bad. But I was not very much satisfied with my interview. हम्म। But this time, it was the panel members were so cordial. They were so good. I, I was so confident after the interview. I felt like this was the best interview that I gave. ओके। So and और पहला ही क्वेश्चन, the thing that you mentioned about getting stuck, पहला ही question. So I had mentioned about my courses that I did. The courses were one IMF financial market analysis, and there were two NISM courses. One was related to derivative and one was related to retirement. So they started with those certifications only. So first question the chairman asked, first question about bond market interest rate. How would you minimize the interest rate risk in bond market? Or it was there in my that course that I did from IMF, but 2 साल पहले कोर्स किया था और अभी इंटरव्यू के लिए ज्यादा टाइम मिला भी नहीं था. I had gone through things, but उतना डिटेल में नहीं. तो I was not recalling. I took some time that I'll think, and then also I was not recalling it. तो आई गॉट, तो पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने हिंट दिया. He gave me some hint about duration, and then it clicked that yes. Then I talked about duration and how interest rates, these things can be managed. तो फिर वहां से मेरा फ्लो फिर अच्छा हुआ. अगर वो पहला स्ट्रेसफुल होता ना, अगर उन्होंने हिंट नहीं दिया होता तो शायद थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता. फिर उसके बाद इट वेंट वेरी स्मूथ. तो फिर तो आई आंसर्ड ऑलमोस्ट all the questions. तो एंड दैट वन थिंग आल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस है ना, ये इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आएगा, वो फेज 2 के मार्क्स पे डिपेंड करता है बहुत. मतलब मेरे लिए है. बिकॉज अगर आप इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर फेज 2 मार्क्स, तो यू नो दैट कि भाई अभी इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं भी गया तो आई मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. तो एक अंदर से वो डर नहीं होता. यू आर मतलब यू जस्ट गो देयर एंड गिव द इंटरव्यू. तो पहले ऐसा था कि आई हैड क्लियर्ड ऑल द फेज 2, बट आई वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं इतना ही आएगा बहुत. तो आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, बट दिस टाइम I knew that I'm getting good marks in the phase 2, so that gave me an extra confidence for the interview. So it went very good. All right. Okay. Thank you, sir. So, one thing that I want to know from you, that how Olive Board exactly helped you. What were the classes that you were, specifically focusing on, and how Olive Board exactly helped you in acing this exam and maybe multiple examinations also. So you can just, in a very full-fledged manner, you can just tell me about that. As I already mentioned, like I like to watch a lot of videos. So for like finance, Uh, I used to so search. you're not audible, Okay, sir. am I audible? Sure, sure. I got a call. Okay. Yes. So I like I already mentioned that I like to watch a lot of videos. So, like for finance current affairs, I would search on weekly finance current affairs or current affairs related to these exams, and I would go through different videos. So, for PFRDA, there were some videos that you only took for PFRDA through MCQs. Then there were few videos that I think Prateek sir took for MCQ, RBI finance MCQ. So I went through all those videos for my phase 2 related current affairs, finance related current affairs mostly. Mm. So that was very helpful. All right. Okay, sir. Now, I would be asking one question from you.
कि फैमिली का भी जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता राइट, है. सो बहुत ज्यादा. how family was actually supporting you because you were already going through your job and of course you were approaching for multiple examinations also. So फैमिली राइट. का क्या कहना था, और अभी भी you can discuss with us कि कितना खुश है और क्या क्या जो यस. चीजें हैं वो चल रही हैं अभी फैमिली में. राइट. तो ये तो मैं पूरा हिंदी में बोलने वाला हूँ, क्योंकि हाँ, फैमिली, श्योर श्योर श्योर. मम्मी पापा के लिए. ठीक है. सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब बहुत बचपन से ही, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली कैन से, और वो भी स्मॉल टाउन. तो पहले से भी बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ाई को लेके, लेकिन माय मदर वाज वेरी मच, मतलब मेरी मम्मी पहले से बहुत ज्यादा पर्टिकुलर अबाउट स्टडी, पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे. हम्म मतलब उन वो पहले सारे इनिशिएटिव्स मम्मी ही लेती थी कि भाई कौन से स्कूल में जो भी बेस्ट स्कूल हो सकता था, या फिर जो भी कुछ कर सकते हैं अबव देयर कैपेसिटी और अबव व्हाट दे कुड डू. तो वो पूरा मम्मी ने पूरा लीड लीड लिया. मतलब 10th तक तो मम्मी कुछ मतलब जो कुछ भी हो सकता था कि भाई पढ़ाई के लिए कुछ भी. बट आफ्टर 10th व्हेन आई गॉट गुड मार्क्स इन 10th, तो पापा आल्सो गॉट सीरियस कि भाई इसको अब तो आई वेंट टू डीपीएस बोकारो. एट दैट टाइम that was not very much affordable for us, but they managed to get my admission there. And after that, even when I started preparing, I had taken some break, because as I mentioned that I had gone through some health issues, and after the health issue I took some more than 1.5 years break. So at that time also they were very much, मतलब वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे कि ठीक है अपना अब यही करो. पापा तो हमेशा चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है. हम्म ही वॉज नॉट पर्टिकुलर, वो कोई कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनको, गवर्नमेंट. लेकिन मेरा था कि भाई रेगुलेटरी बॉडी ही करना है. एंड मम्मी वाज ऑलवेज कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन. और जब मैं 1.5 2 साल का ब्रेक भी लिया था, दे वर वेरी सपोर्टिव कि ठीक है घर पे बैठ के करो, या फिर तुम्हें जहाँ भी करना है करो. And it took me like 2 or more than 2 years to through this time also. They were like always कि भाई इस टाइम अच्छे से करो, हो जाएगा. And they were very happy. मैंने जब रिजल्ट बताया, my मम्मी was like, she was, मतलब चिल्ला ही रही थी कि वो ऐसे एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट. तो हम्म. it has always been a great support. That is My great. and also my brother and my sister. Oh, that is मतलब actually छोटा very फैमिली. wonderful. Yes, yes. Okay, छोटा so फैमिली एंड. यस. हाँ जी, please sir, please. मतलब एक वेरी क्लोज नेट फैमिली है, मतलब 4 5 लोग हैं, बहुत क्लोज नेट. सो एक दूसरे के लिए बहुत ऐसे सपोर्टिव और खुश खुश होते हैं, मतलब कि तो एवरीबॉडी वाज लाइक दे वर मैड अबाउट, लाइक फाइनली व्हेन आई गॉट इट. ओके. यस. क्योंकि वो भी एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नी का. हम हर टाइम ऑफ कोर्स गोइंग थ्रू सिलेबस एंड एवरीथिंग, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट यस, दिस यस. दिस इज आल्सो समथिंग दैट प्लेज अ ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल. And being in this environment is, of course, you're actually very blessed in nature, and of course congratulations to your family again. All right, so we'll close this discussion here only. So we'll close it with your closing of thoughts here. We want your thoughts how you can actually inspire other aspirants also, that they are actually going through this particular kind of phase where you've been there. तो हम इसी के साथ जो है वो एंड करेंगे, बट वी वांट योर थॉट्स हियर. Yes, I'll share few thoughts. First is, if you have started it and if you are a serious candidate, sooner or later you'll get there. हम्म It is for sure. If you are a serious candidate, and if you are doing it seriously, you will get there. There is no doubt about it. Uh, ये तो पहला बात है. मतलब ऐसा नहीं कि बीच में एक बार दिया नहीं हुआ तो छोड़ दिया नहीं. जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, यू विल गेट देयर. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो इट कैन बी सेड. Another thing is, for these exams, phase 2, paper 2 is very much important. If you are doing very good in phase 2 paper 2, बाकी सब decent होने से भी final merit list हो सकता है. And third thing is, mindset is also very much important. Like, if you know that you'll get something, and with surety, there is no doubt about getting something, then eventually you'll get it.
अगर देर इज डाउट लाइक अगर फेज 2 में मार्क्स अच्छा नहीं है ना, मतलब इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली ऐसे सोच नहीं सकते कि भाई ये होगा होगा ऐसा, मतलब अगर फेज 2 में मार्क्स अच्छे या कुछ अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, और फिर यू आर श्योर अबाउट गेटिंग समथिंग, बस यू नो दैट इन योर हेड। अगर वो हो गया ना विदाउट एनी डाउट, देन दैट विल टर्न इनटू रियलिटी। सो ये तीन चीज की अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से करो, और नो दैट you'll clear it this time, and know it with all the belief and faith without any doubt, and you'll get it. Alright. Okay, so thank you Yes, so much, sir. It was actually wonderful session with you. And with thank you, a ma'am. wonderful kind of thing, I will just mention कि बहुत ज़्यादा boosting एक kind of एक ऐसा session था जो कि I'm very sure that people will find energetic after watching this particular session. Thank you so much for being with us here. And again, congratulations to you, and congratulations to Thank your you, ma'am. family for sure. And Yes, again, thank you so much for being here, sir. thank you, ma'am.